हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये सब एक ही शख्स को अवार्ड मिले हैं। किस लिए मिले हैं हम आपको बहुत ही जल्द बताने वाले हैं, उनसे मिलाने भी वाले हैं। देख सकते हैं इतने सारे अवार्ड्स एक ही पर्सन को, केरला के एक बहुत ही छोटे शहर में। जानना चाहेंगे आप क्यों मिले हैं? चलिए, हमारे जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र हैं मिस्टर अज्जू सर हमें बताएंगे कि इसका क्या बेनिफिट है और क्यों इनको ये अवार्ड्स मिले हैं। हाय फ्रेंड्स, ये हैं मिस्टर अज्जू सर जो हमें गाइड कर रहे हैं। इन्होंने ही हमें इनवाइट किया है यहाँ पर, और जहाँ पर ये लेके आए हैं आज प्राइवेट प्लेस, एक फार्म है, एक नर्सरी है, और इस शख्स को काफ़ी सारे अवार्ड मिले हुए हैं। अज्जू सर एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहले कौन से अवार्ड्स मिले हुए हैं। हाय अज्जू सर, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन मी which awards this sir has got? We are in the house of Sri Dominic Okay. MM Mannukushimbi. Okay. He got 2 state awards, Okay. 1 national award, and Tata Varan awards. 2 state awards, 1 national award. Then national level Tata Varan awards also. Okay. For what thing? For First state award for cotton planting. Okay. Second for mixer planting. Okay. Mixer plantation. Then national award for the best coconut farmer in India. तो फ्रेंड्स, ये जो अवार्ड्स मिले हुए हैं इनको बेस्ट प्लांटेशन के लिए मिले हुए हैं। मिक्स प्लांटेशन है, कोकोनट प्लांटेशन है। आप इमेजिन करिए कि इनके पास कितनी सारी प्लांटेशन रहेगी कि इनको अवार्ड मिला है। अभी हमने कुछ देर पहले इनके फार्म में कोकोनट ट्राई किया। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का इन्होंने जो प्लांटेशन किया है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की है। तो चलिए आज हम इनके थोड़े अवार्ड्स देख लेते हैं। प्लीज़ सर, कैन यू शो मी दैट स्टेट एंड नेशनल अवार्ड्स एंड ऑल? He is getting the first state award. He is getting this from Kerala Minister. Okay. Second award from Minister of Kerala. Okay. Then from national award from Central Minister. Okay. Then we can show the awards. Is here. There's the national. This is we are saying the government awards. The local awards there. Okay. Private awards is there. Okay. Plenty of them. This is the first Kerala award. Okay. Kerala Kesari. Okay. Then second, Karshakotama, mixer plantation. Okay. Best farmer in Kerala. Okay. Then the national award is, we are going to the national award. Okay. Coconut Development Board. Okay. Best farmer, coconut farmer in India. Okay. Then SPC is there, the award is Deepika, all the things, the private awards is there. Okay. Only the Tata Varan award is there. Okay. The Tata Varan Kashaka award. Okay. Then plenty of awards. The Panchayat level, district level, block level, all levels awards is there. Okay. The private, so many private agencies, they give awards. Okay. Very nice. It's a very big thing that a single person will get so many awards just for the plantation. But it is not just a plantation, it's a huge thing. तो फ्रेंड्स, हमने आपको अवार्ड्स दिखा दिए, लेकिन जिन्होंने को अवार्ड मिला है मिस्टर डोमिनिक, हम उनसे मिलाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं मिस्टर डोमिनिक। नमस्ते सर। डोमिनिक, sorry for the wrong pronunciation. So how are you? Fine, I am fine. Very nice. Sir, it's glad to meet you, and we are very thankful to you for that you had arranged our visit at your farm, showing your plantation, everything. Just tell me little bit brief about you in your local language. We are comfortable. എനിക്ക് നമ്മൾ ജൈവ കൃഷികളാണ് മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് തെങ്ങ്, കവുങ്ങ്, ജാതി, കൊക്കോ, കുരുമുളക് ഇവയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ പശു വളർത്തുണ്ട്, മീൻ വളർത്തുണ്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാ കൂട്ടവും കൃഷിയുണ്ട്. റബ്ബർ കൃഷി മാത്രമില്ലാത്തതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ എല്ലാ കൃഷികളും ചെയ്താണ് നമുക്ക് ഈ അവാർഡുകളെല്ലാം കിട്ടിയത്. ആദ്യം 2011 സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കേരകേസരി അവാർഡ്, 2015 കർഷകോത്തമ അവാർഡ് സമ്മിശ്ര കൃഷിക്കുള്ള അവാർഡാണ്. പിന്നെ 2016 നാഷണൽ അവാർഡ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല നാളികേര കർഷകൻ, 2018 ടാറ്റ വൈറോൺ അവാർഡ്, 2020 അക്ഷയശ്രീ അവാർഡ്. ഇങ്ങനെ പഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക്, ജില്ല, അങ്ങനെ എല്ലാ അവാർഡുകളും കിട്ടിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. And hello ma'am, what's your good name? Hello, Elsie. Okay, so what you are doing, your husband is very talented person. He has done something different. So how you are helping your husband in their work?
all time. All time. How you? What is your role? Are you handling only the? ആ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടാറുണ്ട്. ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി സഹായിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം. പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നോ ഞങ്ങൾ കൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്. അമ്മ, ഞങ്ങൾ, മക്കൾ എല്ലാവരും കൂടെ കൂട്ടായിട്ടുള്ള ആലോചിച്ചും അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഇടപെടും. So nice of you. Thank you so much for all your whatever you have done for us. It's really grateful. We are very thankful to you. Thank you. तो फ्रेंड्स, आपने देखा इतने महान शख्सियत से आज हम मिले हैं जिन्होंने इतने बढ़िया अवार्ड्स जीते हैं, स्टेट अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स. इट्स नॉट अ जोक. इसके लिए इन्होंने बहुत परिश्रम किया है तो जाके आज इनको ये अवार्ड्स मिले हैं. तो फ्रेंड्स, ज़रूर विज़िट करें अगर आप केरला आ रहे हैं या आपने अभी तक ये फार्म विज़िट नहीं किया है तो लाइफ में एक टाइम में ज़रूर देखिए. इन द लैप ऑफ नेचर कैसे इन्होंने अच्छी प्लांटेशन ग्रो की है, कैसे इनको जो बेस्ट कोकोनट फार्मिंग के लिए अवार्ड्स मिले. आप यहाँ के कोकोनट को ज़रूर ट्राई करिए. फॉर मोर डिटेल्स स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच. तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.